नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है थ्योरी क्वेश्चंस आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और ICR. ICR is basically required in case of general plane motion, which is a combination of translation as well as rotation motion. For the sake of analysis, हम ये मान के चलते हैं कि at a given instant of time, body is performing pure rotation. So now अगर rotation है, then इसका मतलब center of rotation भी रहेगा. So this ICR is basically will be a center of rotation at a given instant. Now अगर बॉडी का पोजीशन चेंज होने वाला है फ्रॉम वन इंस्टेंट टू अनदर, द लोकेशन ऑफ ICR will also change from one instant to another instant. Usually to get the location of ICR, we draw perpendiculars in this way to the known directions of velocities, और इनका इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो रहेगा हमारा ICR. तो चलो इस कंसेप्ट को हम डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं. सो हम लिखेंगे इन जनरल प्लेन मोशन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इट इज़ पॉसिबल टू लोकेट एन इमेजिनरी पॉइंट अबाउट विच द बॉडी कैन बी considered to be performing pure rotation. This point is instantaneously at rest and is called as instantaneous center of rotation. Now we write the properties of ICR. तो पहला प्रॉपर्टी है ICR is an imaginary point. Second one is ICR may lie inside or outside the body. क्योंकि ICR का जो लोकेशन है वो डिपेंड करता है वेयर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन टू द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटीज विल मीट. देन थर्ड प्रॉपर्टी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ICR इज 0 एंड फाइनली पोजीशन ऑफ ICR इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट एंड इट इज नॉट अ फिक्स पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज. इसके लिए लेट अस कंसिडर वन ब्लॉक केप्ट ऑन द इंक्लाइन सरफेस एंड दैट इंक्लाइन सरफेस इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. नाउ इस एंगल थीटा को अगर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, सो देयर विल बी वन पॉइंट एट विच this block will start sliding down on its own without any external force applied to the block. Now the angle at which this happens will be called as angle of repose. तो आइए देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज का हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. We write it is the minimum angle made by the inclined surface with the horizontal at which the body kept on the inclined surface will start sliding down without any external force applied to the body. This happens due to self weight of the body. Now to prove that angle of friction is equal to angle of repose, हम सबसे पहले इक्वेशन डेवलप करेंगे for angle of repose. For that let us consider the FBD of that block once again. W is the weight of the block acting in downward direction. N1 is the reaction offered by the inclined surface on the block. F is the frictional force. The block will have a tendency to slide down, therefore direction of this frictional force will be in upward direction along the inclined surface. Now we will develop the equation of equilibrium for this block. So सबसे पहले हम लिखेंगे summation fx equal to 0. So we write
frictional force F minus component of the weight of the block along x direction, that is W sin theta. ये towards left है, इसके लिए negative sign. Now we write the value of F as mu n1. So mu n1 is equal to W sin theta. Let us say this as equation number 1. Then we write summation Fy equal to 0. So here we write n1 minus component of weight of the block along y direction, that is W cos theta. This is in downward direction, so therefore यहाँ पे negative sign. So we get equation number 2 as n1 equal to W cos theta. Now we will divide equation 1 by equation 2. So we write mu n1 divided by n1 equal to W sin theta upon W cos theta. तो यहाँ पे n1 और n1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे W कैंसिल हो जाएगा, और ये sin theta upon cos theta will give us tan theta. So we write mu equal to tan theta, and therefore theta is equal to tan inverse of mu. Let this be equation A. Now हम इक्वेशन डेवलप करेंगे फॉर एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसके लिए let us consider this body kept on the horizontal surface. Let us say W is the weight of the body, P is the external applied force, F is the frictional force, and N1 is the normal reaction exerted by the surface on the block. Now यहाँ पे let us consider R is the resultant of these two forces, frictional force and normal reaction, and let us say phi is the angle made by the resultant with the vertical. Now अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ phi को लिखते हैं, that is tan phi equal to F upon n1, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is mu n1. So we'll get tan phi equal to mu n1 upon n1. यहाँ पे n1 कैंसिल हो जाएंगे, so we'll get tan phi equal to mu. So finally हम लिखेंगे phi equal to tan inverse of mu. Let us say this as equation B. Now हम ये दोनों इक्वेशन A और इक्वेशन B को कंपेयर करेंगे, तो we find that right side of the equation A and B is same. Therefore we can say angle phi is equal to angle theta, that is angle of friction is equal to angle of repose, and this is the required proof. अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.